Vivek ji met me 2 years ago. He just came to my house, my office with his wonderful wife, and he told me, तो मैंने भी कहा भाई ठीक है बहुत लोग बोलते हैं. He said that one thing I want to do is I want to take the message of Shri Aurobindo to the world and to the younger population. And I've just finished a film on Bengal, so it's about Bande Mataram movement and all those things. So we aligned at that level. And I also think it's very, very important. We all talk about Dharma. If Dharma is going to Bab's temple, is fine, is wonderful, but Dharma doesn't end there. If you have listened to me, if we talk about Indic Renaissance, if you talk about divine consciousness, if you want talk about supernatural, then I think it is about duty. As an American citizen, in America they say duty, in India we say dharma. It is very important that we invest in our younger generation. And they are not going to read books. Movies are modern literature. We made a very small budget film called The Tashkent Files. It went on to become a blockbuster. And it opened up eyes of so many people. The Kashmir Files, we make very small budget films. Small I'm saying in Indian terms because they make very expensive films. And a 25-30 crore rupee film made 350 crore rupees because of your love. I have now made the Bengal Files. It's going to come in September this year. It's about Bengal. You'll see what we have lost. The greatest of... There are only two places in the entire world where the real cultural renaissance took place. One is France, second is Bengal. Science. All the Nobel Prizes we won science from Bengal. Literature, Bengal, Tagore. Botany, philosophy, Vedanta, Hindu philosophy, Ramakrishna Paramahans, Dayananda Saraswati, Hare Rama Hare Krishna movement, entire the Bengal. Music, literature, cinema, Satyajit Ray, Mrinal Ghosh, Ritu Ghatak. All the great music you love, R.D. Burman, S.D. Burman, Dam Maro Dam and all those songs, jab dance karte hain. Whereas some of the best chefs in the world have come from Bengal. Nationalism, Bande Mataram, Jana Gana Mana have come from there. So I have made the film so the younger generation knows what we have lost, what we are making out of Bengal. We are making Kashmir, it's become another Kashmir. I am telling you, Kashmir mein kuch nahi ho raha hai. Bengal is going to explode in next 15-20 years. Trust me, you will cry कि अरे तब बोला था विवेक ने हमने सुना नहीं. आप mark my words ना बन जाए. मैं 2 साल से कह रहा हूँ हुआ मुर्शिदाबाद में कि नहीं अभी. आप देखना क्या होने वाला है. So कुछ चीजें करनी चाहिए. I am investing my time, energy, everything into creating that awareness. That part I have done. I have mentored 10-15 young filmmakers, so they are going to make those kind of films. Now I want to take great Hindu philosophy. I want to take lives of great Hindu people and make them into these fascinating films. So when he came and he said we should do something about Bande Mataram, at that time I heard him, I appreciated the idea, but perhaps I was not ready. So this time I was coming here, he said आइए कुछ आप यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों से बातचीत करिए. मैंने कहा I have to be first ready. So I went to Aurobindo Ashram. और वहाँ आलोक जी थे, आप लोग जानते हो. तो मैं वहाँ पे 2 दिन कुछ नहीं किया. मैंने I had no agenda, nothing. I just sat there, मैं अपना meditate करता रहा अपनी स्टाइल में, वहीं बैठ के आश्रम में समाधि पे. फिर मैं वहाँ गया मदर के यहाँ, वो जो पड़ा मातृ मंदिर गया, वहाँ पे I spent time. They were nice to me, so they gave me double time or some time like that. I saw all the creativity over there. And मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा आदेश दिया गया है कि I must do this. Wow. And I have no reason, no materialistic reason to make this film. If you calculate my career in typical worldly words, everybody said पागल हो गए हो क्या, ये बेसमेंट में 50 लोग के सामने बैठ कैसे बात क्यों करते हो, क्या कौन, who cares about these people, कौन सुनना चाहता है आजकल ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को, फिलोसोफर्स को. पर मेरे लिए जिंदगी वेस्ट हो जाएगी. ये धर्म की बातें करना बड़ा आसान होता है, पर धर्म का काम करना बड़ा मुश्किल होता है. और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मंदिर में जाके मैं 1000 रुपए चढ़ा के खुश हो जाऊँ कि मेरा काम हो गया. तो मेरे को ना तो मैं गिल्ट रिडन हूँ, ना मुझे गिल्ट फ्री होना है. बट आई थिंक दैट यू ओwe it to your children. इस फिल्म के लिए nobody is going to give money, no studio is going to invest even 1 penny. कोई नहीं करने वाला है. ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा.
And I'm not saying that you have to give money for that. I'm not American style filmmaker की अभी पैसे ही आपसे लेके मांगने लगूँ. I'm not like that. लेकिन मैंने ये देखा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ताकत होती है. अगर हम सब लोग यहाँ बैठ के डिसाइड कर लें कि काम होना ही है, तो आप सब इसके ट्रस्टी बन सकते हैं, आप सब इसके कल्चरल शेयर होल्डर बन सकते हैं. बाकी ये बताएंगे आप किसी भी लेवल पे यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट. और कुछ नहीं तो मैं अब आपको एक अमेरिकन स्टाइल में एक बात बताता हूँ, और उसके बाद भी अगर आपका दिल नहीं बदला तो फिर सॉरी, फिर भगवान आपका मालिक. समझिए ये बात मैंने आपसे 2019 में द कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा था, और आप सब लोगों ने उसमें $100,000 डाल दिए होते. आज सोचिए आप कितने करोड़ों के मालिक हैं. 35 करोड़ की फिल्म ने 350 करोड़ का बिजनेस किया. ROI लगाइए. 500% का ROI द ताशकंद फाइल्स में, और जो हमने अभी द बंगाल फाइल्स बनाई है इसका ROI आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है. बिकॉज आई स्पेशलाइज इन मेकिंग वेरी कंट्रोल्ड. मैं लाइफस्टाइल में खर्चा नहीं करता, मैं वो सब नहीं करता हूँ जो बॉलीवुड वाले करते हैं. मैं 24 घंटे सिर्फ काम करता हूँ. हमारी टीम जो है पूरी धार्मिक टीम में काम करते हैं, एंड वी क्रिएट वर्ल्ड क्लास सिनेमा. सो आई टोल्ड हिम इफ वी हैव टू मेक दिस फिल्म, वी विल मेक इट ओनली एन ऑस्कर क्वालिटी फिल्म. Sri Aurobindo deserves nothing less than an Oscar quality film. I cannot make it with Indian mindset कि चलो क्या इन लोगों को तो दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है. No, when the biggest people of the world, and my dharma is not to just make a film. My dharma is to convert people to divine consciousness. Want them to understand the power of one man, how one man can free. In fact, without Sri Aurobindo, Bengal wouldn't have been reunited. Yes, absolutely. Correct? भारत को जोड़ने का काम सिर्फ एक आदमी ने किया, तोड़ने का तो हजारों लोग मिल जाएंगे. Bengal was divided in 1905. It is because of him, one man, his spiritual strength, it got reunited. As today, India is on the verge of getting divided in smaller units. World is getting divided. Suppose if collectively we can do this, you cannot realize and understand this is that movement where greatness is achieved. You will be part of a great history, because I am determined to make this film. Right? You can be part of this. Financially or morally or emotionally, in whichever way you want. आज रात को जैसे नहीं पहले मीटिंग्स होती नहीं फ्रीडम मूवमेंट में, बेसमेंट में, किसी को बताएंगे नहीं, पर हम लोग ये करेंगे. तुम बम फोड़ देना, तुम वो कर देना. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. So I leave at this. I have written a book which is highly inspired by Indian Vedantic philosophy. I have made very simple rather than making it complex. Making simple is very difficult. So I made this. And this is one of the best sellers amongst young people. I don't know why. Maybe they like my beard and buy that, or because it's called the Book of Life. Everybody is finding meaning. तो मैं आपके लिए लेके आया था. Thank you. And I can't be better moment than this. धन्यवाद मेरे को इतनी देर टॉलरेट करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. So from today, all of you are my brothers and sisters and mothers also.